then am I audible, guys? Hello, Yes, ma'am. am I audible? Yes, ma'am. ठीक है. So Tanveer, my question to you is, what do you understand by decision making? Ma'am, decision making is a process of it's a process of making choices by identifying a decision. By identifying a decision. Okay. Okay. So basically क्या होता है? Like, I mean, decision making is a stage which you will reach once you evaluate all the alternative options and then you choose the best out of it. ठीक है. तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपना करियर क्या बनाना है, तो उसमें आप देखोगे कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है. ऑप्शन क्या क्या है का मतलब है कि आपके पास कितने फंड्स हैं, कितना एक्सेस है, आपके मार्क्स कितने आए थे, है ना. व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान, आप करियर में क्या बनना चाहते हो. So when you evaluate all these things, all these important information, and then you choose the best alternative out of the available options, so that will be your decision making. So it is a process, or the process of making choices by identifying a decision, gathering information, and assessing alternative resolutions. So ये जो प्रोसेस है बेसिकली स्टेप बाय स्टेप चलेगा, है ना. क्योंकि आप इसमें देखो कि भैया मुझे फैसला किस चीज से रिलेटेड लेना है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करना, और बाकी जो उसके रेजोल्यूशन जो आपके चॉइसेस हैं उसको इवैल्यूएट करना. ओके. नाउ की चैलेंजेस व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं डिसीजंस को लेते वक्त. सबसे पहले कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाती है. बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? मैम इन्फॉर्मेशन लाइक हर लोगों से सजेशंस लेते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, बट कौन सही सजेशन दे रहा है वो मैटर करता है. वेरी गुड. और जो यानी कि जो हमारा So much सोर्स, data. सो मच ऑफ डेटा. यस, कई बार बहुत ज्यादा एनालिसिस इवैल्यूएशंस करने के चक्कर में बहुत ज्यादा डिसीजंस गलत भी होते हैं, डिले भी होते हैं. ज्यादा डेटा होना और Different perspectives are there also. एग्जैक्टली मतलब हमें डिफरेंट, एक तो सोर्स, बहुत सारी सोर्स से इंफॉर्मेशन आना, कई बार डेटा बहुत ज्यादा होना, और कई बार गलत सोर्स से इंफॉर्मेशन भी आना. फॉर एग्जाम्पल, you are planning to do a course in India, and some of your friends who are studying from abroad, they are giving you information कि ये वाला करियर बना लो, इसमें पढ़ लो, इसमें ये जॉब्स मिलती हैं, उसमें वो जॉब्स मिलती हैं. भाई आप इंडिया में हो ही नहीं, तो आप इंडिया में जॉब पर्सपेक्टिव कैसे बता सकते हो? करेक्ट. Yes, यस ma'am. मैम. So that way also, जब हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आ जाती है, that is your overloaded information. Second one is not having enough information. Not having enough information means कई बार हम लोगों के पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ही नहीं है डिसीजन लेने के लिए. लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अगर अपना करियर प्लान किया इंडिया के अंदर, तो आपके पास ये तो इन्फॉर्मेशन है कि ये वाला कोर्स कर लो, ये वाला कोर्स है, ये वाला कोर्स है, लेकिन उसका फीस स्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या आप डिसीजन ले लोगे? No, ma'am. नहीं. तो इसी तरह से, like whenever your information is not sufficient in order to reach out the information, maybe you know the available options but you don't know how to execute the available option. Maybe you don't know the consequences, you may not be knowing the cost of taking that decision. तो जब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं, पूरी नहीं है, तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे. क्लियर. थर्ड इज मिस आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम. कई बार क्या होता है, हमारा डिसीजन इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हम अपने मेन मुद्दे से हट जाते हैं. एग्जाम्पल बताओ. एनी एग्जाम्पल?
लाइक हम लोग डिसीजन लेते लेते ड्रैग हो जाते हैं और हम अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम जो है या एग्जैक्ट जो इशू है उससे तो वो वाला फैसला तो ले ही नहीं पा रहे, हम किसी और डायरेक्शन में चल पड़ते हैं। एन एग्जाम्पल, नैन्सी सोचो, तनवीर सोचो बच्चे। किसी को भी नहीं आया? नैन्सी कुछ भी क्लिक नहीं करा बच्चे? हेलो, क्या मैम? मैंने एग्जाम्पल पूछा था। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि कई बार क्या हो जाता है एट द टाइम ऑफ वो एग्जीक्यूशन या डिसीजन मेकिंग टाइम। क्या? हेलो, सॉरी। हेलो, हेलो। हाँ, एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक है। कई बार क्या होता है डिसीजन लेने के टाइम पर, अभी ठीक है आवाज? यस मैम। ओके। कई बार क्या होता है डिसीजंस लेने के टाइम पर हम लोग अपनी मेन मुद्दे से या कोर इशू से हट जाते हैं। सो वी मिस आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मीन्स लाइक जो आपका डिसीजन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आप खुद नहीं समझ पा रहे कि एग्जैक्टली इशू है क्या। इसका एग्जाम्पल बताओ। मैम जब बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि किस पे ज्यादा ध्यान दे। ओके, और और लाइक मैम अगर मेरे लैपटॉप में अगर कोई लाइक ऑडियो नहीं आ रहा है, ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गई, हम्म, तो उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। हार्डवेयर में भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर सॉफ्टवेयर में भी। सो हाँ, वो डिफाइन मतलब वो ढूंढना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ये करेक्ट, कहाँ से कहाँ पे प्रॉब्लम। करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कई बार, जैसे अगर ये तो चलो हमने छोटा सा एग्जांपल दिया लैपटॉप में कि इशू है, लेकिन एग्जैक्टली इशू क्या है वो हमें नहीं समझ में आया। ऐसे ही जब हम हॉस्पिटल्स रन करते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं एंड वी सी दैट वेयर एग्जैक्टली द प्रॉब्लम लाइज, व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू जिसके लिए हम लोग सोल्यूशन पे काम करें, तो पहले तो हमें प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई करने में इशू टाइम लग जाता है। और मैं तुमको जैसे अपने आई मीन रियल स्टोरी ये है अभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि सबसे पहले तो लोगों को इशू ही नहीं समझ आ पाता कि इशू क्या है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट, कोर, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग एंड इम्पोर्टेंट एरिया होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। बिकॉज जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है तो आप सोल्यूशंस पे एक ट्रैक मिल जाता है कि भाई ये इस पे काम करना शुरू कर दो। ठीक है, यस मैम। ओके। देन ओवर कॉन्फिडेंस इन द आउटकम, कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं या हमें लगता है कि यार ये जो सोल्यूशन हमने निकाला है ये बेस्ट सोल्यूशन है, तो हम क्या करने लग जाते हैं उसका रियल टर्म्स में उसकी वायबिलिटी चेक करना, या फिर उसके ऊपर हम लोग के और फर्दर क्या मतलब क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है उस सॉल्यूशन के फेल होने की, उसको चेक नहीं करते, तब भी हमारा जो आउटपुट है वो खराब हो जाता है, तब भी वो एक हमारे लिए डिफिकल्ट इशू बन जाता है, यानी कि चैलेंज बन जाता है डिसीजन मेकिंग में।
Next is impulsiveness. Guys, is my voice clear? Because I have little bad throat today. So is it clear to you guys? Are you able to understand what I'm saying? Yes, ma'am, Yes, it's ma'am. clear. अच्छा अच्छा Sometimes it is breaking, I think, because of network issues. अच्छा ठीक है. So whenever you are stuck or like I mean it's breaking and if you have not understood, ask me. I'll repeat. ठीक है. Okay, ma'am. Okay. Next is impulsiveness. कभी कभी क्या होता है कहते हैं ना बहुत इंट्यूटिव होके आपने डिसीजन ले लिया मतलब एक होता है ना अंदर से फीलिंग ली सोचा हल्का सा और फिर सबने डिसीजन ले लिया आपने जैसे कई बार बोलते हैं ना आपने ऐसा क्यों किया कई बार बोलते हैं ना लोग मेरा मन किया बट हॉस्पिटल्स में या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम लोग इम्पल्सिव नहीं हो सकते वी कांट टेक अ डिसीजन थिंकिंग कि मेरा मन किया ठीक है बिकॉज हमें हर डिसीजन के आगे एक्शंस क्या होंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे ये सब इवैल्यूएट करना जरूरी है तो बिना इवैल्यूएट करे जब हम इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले लेते हैं तो वो भी हमारे लिए चैलेंजिंग बन सकता है वो भी हमारे लिए एक इशू बन सकता है नेक्स्ट वी हैव ओपिनियंस एंड ऑब्जेक्टिविटी ओपिनियंस एंड ऑब्जेक्टिविटी में क्या है कि हम ऑब्वियसली जब हम कोई भी फैसला लेंगे तो लोगों को इन्वॉल्व करेंगे ही ठीक है अब जब लोग आते हैं तो वो कई बार अपनी प्री कंसीव्ड आइडियाज या प्री कंसीव नोशंस लेके आ जाते हैं मतलब उनकी अपने पहले के माइंड में बने हुए थॉट प्रोसेस ठीक है Yes, ma'am. so that may also impact the objectivity that may also impact the important aspect which you need to evaluate for taking the decision नेक्स्ट इज नॉट अ वन ऑफ इसका मतलब क्या है कि अगर आप डिसीजन लेते हो और उस पर फॉलो अप करते रहते हो then it could be a way to improve your decision making process set a useful precedent if you have to take a similar step in future तो कह रहे हैं कि आप अपने डिसीजन को कंटिन्यूसली इवेलुएट करते रहो कंटिन्यूसली अंडरस्टैंड करते रहो सो दैट और भी अगर नियर फ्यूचर इस तरह का इशू आता है तो you'll be able to learn from this पास्ट डिसीजन और अब ऐसा भी हो सकता है कि अब जो डिसीजन आया अब ऐसा पहले भी आया था तो उसको भी हम लेके थोड़ा सा पुराने वाले उससे भी हम लोग लर्निंग ले सकते हैं ठीक है सो सो बेसिकली क्या है कि जब भी आपको फॉलो अप करना है अपने करंट डिसीजन पे भी और पास्ट डिसीजन में भी सिमिलर तो वो फॉलो अप भी करना कई बार हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है बिकॉज वंस यू हैव टेकन डिसीजन एंड स्टिल वर्किंग ऑन इट दैट कैन बी लिटिल टेडियस लिटिल कॉम्प्लिकेटेड लिटिल कॉस्ट इनकरिंग ऑल्सो ठीक है क्लियर Yes, एक एक बार पांचों पॉइंट्स गो थ्रू करो 5 मिनट ले लो खाली पॉइंट्स गो थ्रू करो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट लेट मी नो
Done? Yes, ma'am. Okay. Now, next is strategies you can use to avoid common pitfalls and hone your decision-making skills, making it better, faster for your future opportunities. वैसे कौन से strategies हैं जिससे हम अपने जो decision making issues हैं उसको mitigate कर सकते हैं? सबसे पहले है reframe the problem. As I said, कि सबसे ज्यादा काम या सबसे ज्यादा इश्यूज, सबसे ज्यादा चैलेंजेस या सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आपकी जो आती है आपके टाइम पर, वो प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई करने में, प्रॉब्लम को ही रिफ्रेम करने में आती है कि भाई एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। ठीक है, सो हमें उस चीज को करने के लिए क्या, तीन एटलीस्ट 2-3 तरीके से अपने इश्यूज को देखने की कोशिश करो, एंड देन यू विल बी एबल टू रीफ्रेम द प्रॉब्लम। एग्जाम्पल बताओ। नैन्सी एग्जाम्पल बताओ, रीफ्रेम द प्रॉब्लम। मैम लाइक हम पॉलिसी अपडेट कर रहे हैं। मैम am I audible? यस यू ऑडिबल। मैम लाइक हम पॉलिसीज अपडेट करते हैं, तो लाइक हर ईयर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हाँ अपडेट करने हैं कुछ पॉलिसीज, एचआर पॉलिसीज ले लो या डिपार्टमेंट की पॉलिसीज ले लो, तो अपडेशन चाहिए होता है हर पॉलिसी को। तो उसमें हम देख सकते हैं कि लाइक कोई अगर हम डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे, कोई पॉलिसी अपडेट करनी है, एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम फिर से रिफ्रेम कर सकते हैं। ओके, तनवीर, एनी इनपुट फ्रॉम योर साइड? तनवीर, would you like to add? No, ma'am. No. Okay, but is it clear to you guys? I mean, ये point समझ में आया? डॉक्टर सिंह, जी मैम। ये प्रॉब्लम, ये वाला पॉइंट समझ में आया? रीफ्रेम दी प्रॉब्लम, ये भी क्लियर है नहीं है क्लियर? मुझे पूछे, बताओ तो सही। समझ रहे हैं। नहीं आया? ओके, एक मिनट। ओके, नैन्सी, कैन यू रीड दिस, रीफ्रेम द प्रॉब्लम? Yes, ma'am. Reframe the problem. Backing up is sometimes the best way to move forward. When you are presented with a problem, step back and think about its all full context. Try to see the issue from as many perspectives as possible. That will help ensure you are not emphasizing one aspect and neglecting others. Begin by trying to think of at least 3 different ways of looking at the problem. थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? ये लोग क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसे फैसले होते हैं जहां पर हम अगर आगे बढ़ने से बेटर है पीछे हो जाओ। ठीक है, और जब भी आप किसी प्रॉब्लम यानी कि किसी इशू को प्रेजेंट करते हो, स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट इट्स फुल कॉन्टेक्स्ट, मीन्स उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से समझो और उसके इश्यूज को
हर एंगल से देखो। जैसे कि आपको अपना करियर बनाने की बात कर रहे हैं, या आप आपको कोर्स चूज करना है 12th के बाद, आप एकदम से आपने क्या किया, फटाफट से जाके बीएससी में एडमिशन ले लिया। अब फटाफट से जाके बीएससी में एडमिशन ले लिया, आपने उसका फुल टेक्स्ट तो स्टडी ही नहीं किया कि बीएससी के बाद मेरे पास कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी, या मैं आगे मास्टर्स करूंगा या करूंगी तो क्या करूंगी, देन उसके बाद मेरे पास उतने फंड्स हैं या नहीं है, मैं अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों को ही फाइनेंस कर लूं, या फिर मेरे पास इतना टाइम है क्या मैं उसके बाद, या फिर फॉर एग्जांपल मैं मेरे पास उतने मार्क्स हैं कि मेरे को उसके बाद मास्टर्स में एडमिशन मिल जाएगा, या फिर मुझे कौन सी लोकेशन पे पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी ऑप्शंस तो आपने इवैल्यूएट ही नहीं किया और एकदम से डिसीजन ले लिया, तो दैट विल बी रॉन्ग। सो व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ डिसीजन, आपको सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा। आया क्लियर? कि भाई आपने अगर एडमिशन लेना है तो आपके पास फी आपके पास पैसे कितने हैं, टाइम कितना है, उस कोर्स की फिजिबिलिटी, अच्छा फिर उस कोर्स को पढ़ने के लिए क्या आपके पास उतना कैलिबर है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को एमबीबीएस में बाय द वे एडमिशन मिल गया किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, बाहर ले लिया, क्या मैं वो 4 साल 5 साल 6 साल पढ़ लूंगी, अच्छे से मुझसे पढ़ाई हो जाएगी, मुझे कोई बाहर जाने के बाद हेल्थ इश्यूज तो नहीं होंगे, एम आई हेल्थ ओके। और या फिर मैं अगर फॉर एग्जांपल दिल्ली छोड़ती हूँ, इंटर स्टेट में भी चली जाती हूँ, तो क्या वहां जाकर मैं सरवाइव कर पाऊंगी। हम्म। तो ये सारे ऑप्शंस को इवेल्युएट करके ही हमें हमें डिसीजन लेना है। तो पहली बात तो प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्लियर? अभी Okay, ठीक है? ma'am. Yes, ma'am. हम्म, It's clear. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है आइडेंटिफाइंग दी, जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें प्रॉब्लम का नाम है आइडेंटिफाइंग दी व्हाट, क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो आप? तनवीर क्या आइडेंटिफाई कर मैम रहे हैं? लूप होल्स। लूप नहीं, लूप होल्स नहीं, हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपना प्रॉब्लम। प्रॉब्लम Uh, मींस आइडेंटिफाई कर मैम रहे तो हैं। जो मिस हुआ वही तो होगा। नहीं 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 नहीं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपना टारगेट कि हमें क्या पढ़ना है। हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपना कोर्स, आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपना स्ट्रीम। फिर स्ट्रीम से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे और उसको इवैल्यूएट करोगे ना। समझ में आया? यहाँ पे प्रॉब्लम का नाम है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कोर्स। अभी क्लियर हुआ कि प्रॉब्लम, यस मैम। रीफ्रेम द प्रॉब्लम का क्या मतलब हुआ? yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट, मेक डिसीजन बेस्ड, एविडेंस बेस्ड डिसीजन। तनवीर आप पढ़ोगे एक बार ये प्लीज? The aim of evidence-based management (EBM) is to use scientific evidence when making decisions, rather than simply trusting one's instinct. Like most people, you probably tend to use your judgment and to base your decision on what is familiar. But experiences that you have had at other companies or in different circumstances may not apply to the situation at hand. There are simple steps you can take to incorporate evidence into your decision making. Use performance data to support your decisions. Get to the most current and complete data possible. Challenge your gut feelings. Is there any objective evidence to support them? Determine whether commonly used business strategies have worked in a situation like yours. Will they apply to your particular case? Check that the business data you come across are current and objective. हम्म, ओके, कौन एक्सप्लेन करेगा? Ma'am, here it is saying that like in most during most problems, uh, we tend to go out with our own understanding and our decisions. हम्म, We make our own decisions, but here it is saying that instead of going for our own
understanding or decisions, we have to do some scientific research Hmm. to see Hmm. if it is scientifically proved to make such decisions. वेरी गुड, वेरी गुड। वो बोल रहे हैं कि कभी भी हम डिसीजन लेंगे ना, उसको हम एविडेंस बेस लो। मीन्स अगर आपने जैसे अपना करियर की प्लान की थी कि भाई हमने बीएचए करना है या हमने एमएचए करना है, तो आपने देखा होगा ना कि पास्ट में जिन्होंने बीएचए करा है उनके करियर कहाँ एस्टेब्लिश है। देखा या नहीं देखा? Yes, ma'am. उसकी इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, ये सारी चीजें आप लोगों ने इवैल्यूएट करी ना। सो दैट मीन्स आपने एविडेंसेस को इवैल्यूएट किया व्हाइल टेकिंग द डिसीजन। ठीक है। Yes. हम्म, तो वो कह रहे हैं कि सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको अपने जिसमें आपको एविडेंस को इनकॉर्पोरेट करना है। सबसे पहले जो भी परफॉर्मेंस डेटा है जिससे आपका डिसीजन सपोर्ट हुआ उसको हम लें और उसके ऊपर पूरा कंप्लीट करंट डेटा गैदर करें। दूसरा, अपनी गट फीलिंग को चैलेंज करो। फिर उसमें देखो कि भाई जो आपकी फील, जैसे अगर इवन इफ यू वांट टू गो फॉर इट, तो उसको चैलेंज करो कि यार आप ये इस कोर्स में जाते हो तो उसके बाद प्लेसमेंट कहाँ कहाँ होगी, या हमारी मास्टर्स कैसे होगी, या मैं क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मेरा नॉलेज लेवल कहाँ तक पहुंचेगा। सो यू शुड चैलेंज योर गट फीलिंग्स। देन determine whether commonly used business strategies have worked in this situation like yours. Will they apply to your particular case? कह रही कि जो भी बिजनेस स्ट्रैटेजीज, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या काम करे, जो पहले इस तरह की सिचुएशन रही है और उसमें इस तरह के फैसले जो आप ले रहे हो, क्या उस उन फैसलों से पॉजिटिव आउटपुट आया है, कुछ काम की इंफॉर्मेशन आई है। फिर चेक दैट द बिजनेस डेटा यू कम अक्रॉस आर करंट एंड ऑब्जेक्टिव, कि जो डेटा आप यूज कर रहे हो वो एक तो आपका करंट डेटा होना चाहिए और आपका ऑब्जेक्टिव से मैच करता हुआ होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है चैलेंज द स्टेटस को। So people tend to choose the status quo over change to stay in their comfort zone, but being comfortable with an approach may not be enough to justify it. कह रहे हैं कि कंफर्टेबल होकर आपको डिसीजन नहीं लेना, आपको हर एस्पेक्ट को चैलेंज करना है, कॉस्ट को इवैल्यूएट करना है, लेकिन ओवरस्टेट भी नहीं कर देना है ताकि उसमें भी हमारा टाइम ज्यादा ना लगे। लाइक एग्जांपल दिया है, if you were starting over, would you use the same marketing tactics to attract customers? Would you attend the same trade shows? Would you emphasize web-based marketing, direct mail, or mix? So don't forget to find supporting data that will help you review your choices objectively. अब वो कह रहे हैं कि इस तरह के, जैसे हमें हमें अपना ब्रांड बढ़ाना है या हमें मार्केटिंग करनी है, तो क्या हम सेम स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे या फिर सेम ट्रेड शोज यूज करेंगे, या हम सोशल मीडिया पे ज्यादा अपने आप को स्प्रेड करेंगे। तो ये सारी चीजों को हमें इवेल्युएट करके फिर उसके बाद अपना डिसीजन लेना है। ठीक है। देन Yes. गेट एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव बट ट्रस्ट योरसेल्फ। कह रहे हैं कि लोगों के ओपिनियंस लो, इंफॉर्मेशन गैदर करो, परफॉर्मेंस टूल्स के हिसाब से चेक्स अपने सारे मेंटेन करो, लेकिन अपने आप पर भी ट्रस्ट करो। ऐसा नहीं है कि दूसरों के व्यूज के बेसिस पे आपने डिसीजन ले लिया। ठीक है। देन डेवलप एन आई फॉर रिस्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि जब भी आप डिसीजन लोगे, इफ आई मेक द रॉन्ग डिसीजन हाउ विल आई नो इट, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है कि मेरा फैसला सही है या गलत, या मैं कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। अगर जा रहा हूँ तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, वो मुझे समझ में आना चाहिए। अगर वो मुझे समझ में आ गया ना, तो हम इवन अपनी जो टोटल हमारी जो इश्यूज हो सकते हैं, कॉस्ट खड़ी हो सकती है, वो नहीं होगी। ठीक है। देन नेक्स्ट इज लेट गो ऑफ पास्ट मिस्टेक्स, कि कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पास्ट मिस्टेक्स भी आपको ओवर पावर कर जाती हैं एंड देन आपके डिसीजंस को कमजोर कर देती हैं, या आपको सोचने में या रिस्क लेने में डराती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी अगर पास्ट में कुछ खराब हुआ भी है तो उसका इम्पैक्ट मेरे डिसीजन पे नहीं आना चाहिए। वहां से सीखो, बट देन उसका हमारे पास मेंटल इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। जैसे अब आप अपने ये सोचते हो कि अच्छा मैं ये कर लूंगा, ये पढ़ लूंगा, लेकिन एक्चुअली आपका कैलिबर कितना है वो हमें पता है ना, हमें अपना कैलिबर पता होता है ना, उसके हिसाब से हमें ऑनेस्टली डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है। बी डिसाइसिव मीन्स जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसको
लेने की लिए असर्टिव रहो, असर्टिवनेस रखो। ठीक है, ओके। ये हम लोगों ने पढ़े थे, थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक्स पढ़ लिया था ना, थ्योरीज का। थोड़ा 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 पढ़ लेना, ये बहुत छोटे छोटे से ही है, ज्यादा नहीं है, इसको पढ़ लेना। ओके ठीक है, मैम। अब है हमारे पास स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस इन हेल्थ केयर। क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में? सबसे पहले हम बात करते हैं राइजिंग मेडिकल कॉस्ट फॉर एम्प्लॉयर्स। कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर्स भी, नॉट ओनली एम्प्लॉयज बट एम्प्लॉयर्स भी जब बेनिफिट्स देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स से इंश्योरेंस वगैरह देते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स वगैरह ज्यादा पे करना है। ये इंडियन स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लेना कि एक्साइज कितना पे करना पड़ता है हमको, ये तुमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और उसके बेसिस पे भी एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ता है। अब जैसे अब देखो आजकल के टाइम पे क्या है, बहुत सारे बेनिफिट देने पड़ते हैं एम्प्लॉयज को इन ऑर्डर टू रिटेन देम, क्योंकि जैसे जैसे वो स्किल्ड हो जाते हैं उनके पास स्विच करने के ऑप्शंस, जॉब हॉपिंग के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, उन लोगों को रिटेन किया जाए, तो इसलिए एक्स्ट्रा सर्विसेज देते हैं, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देने में भी हमारी काफी कॉस्ट इनकर होती है, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशंस को यानी कि हॉस्पिटल्स को फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद कह रहे हैं मास एडॉप्शन ऑफ वर्चुअल केयर। कह रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, लोग जैसे टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट है वो भी काफी काफी स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, काफी स्प्रेड हो रहा है, लोग उस वर्चुअल केयर के ऊपर भी जाने लगे हैं। तो ये एक फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि एक तो उसकी कॉस्ट हॉस्पिटल की कम हो रही है, लेकिन वर्चुअल केयर में रिस्क और चैलेंजेस भी काफी हो सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज है हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद कह रहे हैं कि कंटिन्यूड मैनेजमेंट ऑफ साइबर सिक्योरिटी रिस्क। ऑब्वियसली कि अभी क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा काम होता है डेटा पर। हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने में, या कुछ नए ऑपरेशंस या नई सर्जरीज को ऐड ऑन करने में। तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो हमारा साइबर केयर रिस्क जो है वो, साइबर सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए काफी सारे आईटी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है। उसके बाद कह रहे हैं कि ICD-10 बेसिकली ये एक बार देख लेना कि ये इंडियन सिनेरियो में है या नहीं, लेकिन प्रॉब्ली हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ओवरऑल हेल्थ केयर इंडस्ट्री का पार्ट आ जाता है ये। तो हेल्थ केयर सिस्टम एंड फिजिशियन प्रोवाइडर्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांजिशन टू न्यू टेक्नोलॉजी मेथोडोलॉजी विच इज IDC-10 मेथोडोलॉजी। इसमें क्या होता है, दो मेडिकेयर एंड मेडिकेड विल नॉट deny claim submitting under this methodology for 1 year. Healthcare system will need to account for this transition, this strategic planning, upgrading. ओके, सो इसमें क्या है बेसिकली, वो जैसे काफी सारे रीएम्बर्समेंट्स मिलते हैं एम्प्लॉयज को। जैसे अगर वो किसी विजिट पे गए या उन्होंने कोई कुछ नए एक्सपेंसेस हुए, तो उनको मीट करने के लिए ICD का एक ऑप्शन आता है जिसमें वो रिइम्बर्समेंट के लिए डाल देते हैं। तो ये एक कॉस्ट वाइज तो मतलब एक एड ऑन है, लेकिन रिटेंशन वाइज देखें तो एम्प्लॉयज के लिए अच्छा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा है। सो दैट मीन्स ये भी एक थोड़ा सा चैलेंजिंग बन जाता है। देन पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट। सो हेल्थ केयर सिस्टम में ऑब्वियसली नए नए एस्पेक्ट्स आ रहे हैं पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए, नए नए डेमोग्राफिक एस्पेक्ट्स भी आ रहे हैं। जैसे कि कौन सा पर्टिकुलर एरिया है, उसके वहाँ के लोगों का जेंडर, वहाँ के लोगों का इनकम, जिस भी एरिया के आप लोगों के ऊपर काम कर रहे हो या पॉपुलेशन पे आप काम कर रहे हो, तो उनका वहाँ पर मतलब उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू उनको कितनी मिलती है, उसके हिसाब से उनका वहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां होने की चांस है। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक दिल्ली और हरियाणा में भी जैसे बच्चों को जो इंजेक्शंस लगते हैं उसमें भी आपको डिफरेंस मिलेगा। वो बोलते हैं कि ये वाला जो प्रॉब्लम है नीमोकोकल करके होता है, आई थिंक एक, वो करें कि वो प्रॉब्लम, या एक और डोज भी पिलाते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि ये ना दिल्ली में नहीं मिलेगा, दिल्ली के बच्चों को वो नहीं लगाया जाता।
थिंकिंग कि दिल्ली में उस तरह की बीमारी आने के चांसेस नहीं है, हरियाणा में ज्यादा हो सकते हैं, तो हरियाणा में मिल रहा है. सो दैट मीन्स इवन एट अ टाइम ऑफ evaluating the diseases which can be spreaded बच्चों में, हम वहां पर भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस देख रहे हैं. ठीक है, तो जब वहां भी डिफरेंसेस देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो आपका जो पॉपुलेशन इंडेक्सेस है या पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट है, वो भी एक आपको एरिया वाइज, स्ट्रेंथ वाइज, आपका ये स्टेट वाइज या कंट्री वाइज, वो भी आपको इवेल्युएट करना पड़ता है, विच कैन बी अगेन चैलेंजिंग फॉर द हॉस्पिटल्स और फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, ये तो हमने ओवरऑल स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस की बात करी. अब हम हॉस्पिटल के अंदर अगर हम देखें कोर हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्वेश्चन भी बनता है. ये 5 पॉइंट्स, टेक 10 मिनट्स, इन 5 पॉइंट्स को सब पढ़ेंगे अपने आप. ठीक है, यहाँ तक पूरा इफेक्टेड तक अपने आप पढ़ेंगे सेल्फ में. ओके मैम. ओके, टेक 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन आते ही आता है. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. गिव 10 minutes to yourself, go through all 5 10 ये 5 points. Okay.
You all studying, right? Yes, ma'am. Good. डॉक्टर सिंह समझ में आ रहा है? डॉक्टर सिंह? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let me know when all of you are done with it. Okay. Ma'am, I am done. Ma'am, I'm done as well. Dr. Singh? Yes, ma'am. Yes, हो गया या still doing? जी ma'am. ठीक है. तो who will explain? Tanveer, will you explain one by one? Yes, ma'am. Okay, good. Shall I read it out first? Up to you. You want to read out? That's fine. So, financial challenges and hospital productivity. Hospitals are the second most energy intensive buildings after restaurants, and globally, healthcare costs are on the rise. These financial challenges, in addition to an aging world population and increasing energy costs, are putting pressure on healthcare organizations to do more with less without compromising quality of care. So, ma'am, restaurants are the most energy consuming industry. Restaurants industry is the most energy consuming industry. So, and after that, hospitals they consume the most energy. So, it is saying that that So, hospital should. so it is saying that nowadays, since a lot of
resources are consumed by this industry, like even by the hospital industry. So the cost is also increasing because of this. So that is also becoming one of the challenge for the hospitals to manage, है ना? क्योंकि क्या है कि apart from healthcare benefits, आपको बहुत सारी एडिशनल फैसिलिटीज भी देनी पड़ती हैं हॉस्पिटल के अंदर, जैसे कि आपको आपके हॉस्पिटल के अंदर ही फूड फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, कैफेज देने हैं, इंटरनेट फैसिलिटी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंज्यूम रहेगी क्योंकि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। देन हाइजीन बहुत ज़्यादा चाहिए। सो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट्स हाइजीन को मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, इवन जो क्लीनिंग सर्विसेज के लिए जो स्टाफ यूज़ किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा यूज़ होता है। दैट मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं अब हमारे हॉस्पिटल्स के लिए भी, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इनकरिंग अ कॉस्ट। सो दैट हैज़ बिकम वन ऑफ द चैलेंज फॉर द हॉस्पिटल इंडस्ट्री। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, गुड। सेकंड पॉइंट। Maintaining patient safety. Every year, an estimated 20,000 people in the US and 5,000 in the UK die from an infection they received while in the hospital. Reducing the risk of infection as well as other potential risks such as power failures is crucial in ensuring high quality uh, of care and maintaining the organization's safety. So, ma'am, like we see in most cases in hospitals that patient go to treatment for one disease and they get another disease from infection while their treatment. So it is due to करेक्ट। सो दैट इज ऑल्सो बिकमिंग वन ऑफ द चैलेंज फॉर दी हॉस्पिटल टू मैनेज। जैसे अभी कोविड में हुआ था, कोविड में जो आपको क्योरिंग का जो रेशियो है वो बहुत कम क्यों था? क्योंकि लोग विद इन हॉस्पिटल ऑल्सो इन्फेक्शन पता नहीं चल पाता था, एक ठीक हो रहा है तो जैसे वो थोड़ा सा ठीक होने लगता था तो उसको फिर किसी से इन्फेक्शन हो जाता था। सो दैट इज ऑल्सो द क्योरिंग रेट वॉज वेरी लेस। सो तभी वो ये बता रहे हैं कि इवन हॉस्पिटल्स में भी, हमें हॉस्पिटल्स को ये भी फेस करना पड़ता है कि एक पेशेंट आपने रखा तो दूसरे पेशेंट से भी उसको कई बार इन्फेक्शन ट्रांसफर हो जाता है। ठीक yes, है। man. My uncle also died that way. So So sorry to hear this. See, these are the examples from where we see that even in hospitals also people get infection from patients. So that is also one of the very big issue for the hospitals to manage. Correct? yes, ma'am. Next. Regulatory standards and emerging energy mandates. Non-compliance with energy standards can lead to a disruption in operations, poor quality of care, safety issues, and substantial fines. At the same time, as energy demand rises, many countries are requiring health facilities to reduce carbon output and meet mandates for energy reductions. क्या बोल रहे हैं इसमें बताओ? So बोल रहे हैं, हाँ Ma'am, बोलो। like there are standards set for different industries. Like Okay. if the hospital doesn't consume a specific amount of energy, then their service quality will be poor, and there will be safety issues also. Good, very good, Tanvir. Right. So they're saying कि in every industry there are standards, there are set standard that needs to be maintained, right? So in the hospital also there are many standards that needs to be maintained so that आपके जो operations हैं, आपके जो daily operations हैं, जो daily आपके day to day के work हैं hospital के अंदर, वो आपके impact ना हो, आपकी जो केयर सर्विस है वो अच्छी रहे, मतलब उसमें पुअर क्वालिटी ना हो, सेफ्टी इश्यूज ना हो, किसी तरह के सब्सटैंशियल फाइन्स ना हो. So as at the same time as energy demand rises, many countries are requiring healthcare facility to reduce carbon output and meet mandate for energy reductions. वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे अभी अगर आप देखोगे ना हॉस्पिटल्स के अंदर भी आपका जो कार्बन का जो वो है आउटपुट है उसको रिड्यूस करने की जरूरत होती है। क्यों?
क्योंकि ओवरऑल नहीं तो फिर वो आपका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम हमें कार्बन जो हमारे हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट्स हैं या हॉस्पिटल में जो बेसिक ऑपरेशंस वगैरह हैं उसमें उसको मीट करते हुए हमारा कार्बन भी प्रोड्यूस होगा। तो कहीं ना कहीं बैलेंस मेंटेन करना इन ऑर्डर टू मीट आउट द स्टैंडर्ड, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, हॉस्पिटल्स के लिए कई बार ये चैलेंजिंग बन जाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट, हॉस्पिटल सिक्योरिटी। Healthcare facilities are often open 24/7, and those visiting are often under a great deal of stress when life and health are at stake. Violence, infant abductions, patient wanderings, and theft of drugs and hospital assets are major concerns. आर मेजर Like कंसर्न। this is regarding the securities. Like uh, I was on a patient satisfaction round a few days ago in ओके। Secureville Hospital. हम्म। So a patient complained that he was in a twin sharing room, हम्म। and only one attendant per patient is allowed. But the patient he was with, he had at least 4 attendants there. They were chit chatting, talking loudly. So he complained about that. Okay, right. So that means it was disturbing his mental peace. But apart from that, even from security perspective, also, people, people need a lot of security steps or security help from the hospital in order to be secure in the hospital, right? So nowadays, since hospitals are also running 24/7, night में भी काम करना है, दिन में भी काम करना है, तो चोरी ना हो जाए, वायलेंस ना हो हॉस्पिटल के अंदर, किसी तरह का कोई रॉन्ग बिहेवियर ना हो, इन सब पे काम करने के लिए एक पीसफुल एनवायरनमेंट बना रहे हॉस्पिटल में, विच इज नॉट इजी। Actually, it is not. It seems to be a easy job for us. I mean, looks like an easy job or looks like an easy job for hospital, but on real grounds, it's very difficult. Am I correct, Tanveer? Yes, ma'am. So, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं रियल ग्राउंड्स पे हेल्थ हॉस्पिटल सिक्योरिटी मेंटेन करने में? Like, ma'am, for example, like it is the duty of the security personnel to not let more than one attendant into the rooms, Hmm. but But we, there were 4 attendants anyway, so right. So in this order is to one kind of. stop them is also difficult, right? Yes, ma'am. And also you never know what kind of people gets in to your hospital, right? Sometimes they are very aggressive, sometimes even कभी कभी आप देखोगे कि हॉस्पिटल्स में भी जब बिलिंग के टाइम पर भी बहुत शोर शराबा मचता है। लोग बोलते हैं कि बहुत एक्स्ट्रा पैसे लगा दिए हैं, इतना बिल किस बात का, ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया था हमारा। ये कई बार स्पेशली व्हेन द पेशेंट डाई, then also people are very aggressive at billing centers, है ना? देखा होगा Yes, आपने। ma'am. So in order to avoid such issues like deploying people there, and then maintaining such a security is a big challenge for the hospitals। ठीक है, बिकॉज हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज्यादा आप देखोगे ना, इट्स अ मैटर ऑफ अ मेंटल पीस, राइट? और मेंटल डिस्टरबेंस बहुत जल्दी आती है, ना ही बल्कि पेशेंट को बल्कि उसके अटेंडेंट्स को भी, है ना? बिकॉज दे ऑल्सो पैनिक अ लॉट, and sometimes they don't trust like whatever treatment has been given to the patient that was best। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं केयरलेसनेस हुई है, और कभी कभी कुछ हॉस्पिटल्स में हो भी जाती है। करेक्ट। Yes, ma'am. जी मैम। राइट। मैम, हम्म। मैम एक चीज होता है मैम, कई हॉस्पिटल्स में जैसे टेरिशरी या बड़े हॉस्पिटल में कई में वो सोशल वर्कर भी होते हैं, हम्म। उसके पार्ट सिक्योरिटी, मतलब वो भी इस तरह के ही प्रोवाइड करवाते हैं, थोड़ा सा मतलब सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं ना मैम? देखो उनका अपना भी काम, जैसे वो आपको जैसे अब जैसे वो लोगों ने काउंसलर्स लगा रखे हैं, तो ऑब्वियसली आपके पेशेंट्स को, उनके अटेंडेंट्स को
काउंसलिंग देना, वो भी एक आपका हॉस्पिटल सपोर्ट सिस्टम का पार्ट हो जाएगा, जी 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 मैम। है ना? जी ओके मैम। ओके, सो लास्ट पॉइंट तनवीर. Patient satisfaction. The well-being of patients is a key to reducing length of stay and हम्म preventing readmissions. हम्म According to the American Society of Healthcare Engineering, ASHE, in green hospitals, patients are discharged an average of 2.5 days earlier compared to traditional hospitals. Additionally, patient satisfaction can also affect a hospital's revenue. If the systems are operating poorly or not at all, quality metrics such as hospital consumer assessment of healthcare providers and systems can be adversely affected. हम्म राइट. सो बोल रहे हैं पेशेंट सेटिस्फेक्शन, द वेल बीइंग ऑफ अ पेशेंट एक इज अ की टू रिड्यूसिंग लेंथ ऑफ स्टे एंड प्रिवेंशन रीएडमिशन. सो बेसिकली ये लोग यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि आपका कितनी जल्दी आपका पेशेंट ठीक हो जाता है, उसके बेसिस पे हम लोग उनको रिलीज कर देंगे. लेकिन ये थोड़ा यूएस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इंडिया में जनरली कोशिश करते हैं एक दिन और स्ट्रेच करा देते हैं, सो दैट उसका हॉस्पिटल का भी एक Their bill goes गोज up. आपा. राइट. बट नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सारे हॉस्पिटल्स में ये अप्रोच है. सम हॉस्पिटल्स डू अंडरस्टैंड दैट incurring the genuine cost is a key to patient success, patient satisfaction, राइट. सो दैट वे ऑब्वियसली जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके उनको घर भेज देना चाहिए. सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग पेशेंट सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन ऑल्सो इज अ बिग चैलेंज नाउ डेज. और ये तो सिर्फ खाली ठीक होने की बात नहीं है, और भी चीजें हैं जैसे कि उनको किस तरह से ट्रीट किया गया, किस तरह से बात की गई, टाइम पे मेडिसिन टाइम पे दी गई, नहीं दी गई, और जितनी बार उन्होंने कॉल किया नर्स को, नर्स अवेलेबल थी या नहीं थी, वो सारे सारे रीजंस हो जाते हैं पेशेंट सेटिस्फेक्शन के. सो व्हाट ऑल क्राइटेरिया डू यू follow when you go for a patient satisfaction survey in your hospital? Yes, ma'am. We ask for the patients if they are satisfied with the treatment, how their experience was with the doctors, the nurse, the GDS staffs. If the GDS Hmm. staffs help them, and if they got food on time, all these aspects we. Hmm. राइट. सो दैट इज बिकॉज अभी क्या है ना, पेशेंट का एक सेटिस्फैक्शन मेंटेन करना भी एक चैलेंज है हॉस्पिटल्स के लिए. रीजन बीइंग देयर आर द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, and people have the other options also, है ना. they can अभी Yes, जैसे ma'am. for And example, yeah, okay, for we example. also try to be very transparent with the cost. Like we tell them, we inform the patients. About that, whatever money or whatever bill that they have, it's because of so and so. So like, I mean, the content of the bill, the content of the amount that we are charging, that what all charges are there, what type of services they have availed, and accordingly how much are we charging. So we also provide the transparency in order to generate the satisfaction among the patients. ठीक है? Clear, guys? Yes, ma'am. Okay. Okay. Next important question is type of hospitals. Okay. इन्होंने बेसिकली यहाँ पर हम लोग ये यूएस का रेफरेंस दिया है, लेकिन इंडिया में भी जनरली हम लोग यही कैटेगरी लेके चलते हैं कि साइज, लोकेशन, ओनरशिप, स्पेशलाइजेशन, इन सब बेसिस पे डिपेंड करता है कि हमारा हॉस्पिटल किस लेवल का है. सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनैलिटी की. नैन्सी. Yes, ma'am. फर्स्ट पॉइंट बताओ आप फंक्शनैलिटी की बेसिस पे. Ma'am, like the services provided by the hospital, some hospitals are multi-speciality and some हम्म hospitals are single specialty. हम्म So there are categories of hospital, like IVF hospital is different. हम्म
सो बेसिकली फंक्शन के बेसिस पे कि किस टाइप का फंक्शनैलिटी रहेगा उसका, इज इट फॉर जनरल पर्पस, इट इज फॉर टीचिंग हॉस्पिटल, या किसी तरह का वो एक्यूट केयर इलनेस को रिजॉल्व करता है। जैसे किडनी के लिए काफी एक दो हॉस्पिटल्स फेमस हैं, राइट। देन आपके लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉस्पिटल, रिसर्च मैम हॉस्पिटल्स। फिर हाँ जी। ट्रॉमा सेंटर भी होते हैं, जैसे जैसे ट्रॉमा से। नारकोटिक्स से रिलेटेड भी होते हैं सिर्फ। और और कैंसर हॉस्पिटल्स होते हैं। कैंसर हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना। तो इस तरह Maternity hospital. maternity hospital. So these are the categories depending on the functionality, like the function of the hospital. Next comes to size. कि भाई छोटे साइज का है, मीडियम हॉस्पिटल है, लार्ज हॉस्पिटल है, 500 बेड से ज्यादा का है, या 100 बेड्स वाला हॉस्पिटल है, तो स्मॉल हॉस्पिटल हो गया, है ना। सो बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द बेड्स ऑल्सो, लाइक अ नंबर ऑफ बेड्स ऑल्सो, वी the size of the hospital or the category of the hospital is defined. Then we have location. डॉक्टर सिंह, लोकेशन आप एक्सप्लेन करो। जी मैम। हम्म, स्मॉलर मैम, जैसे हमारे जैसे हॉस्पिटल्स या सेंटर्स ये डिवाइड किए होते हैं पेरिफेरी में, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया, और टेरिशरी, है ना। पेरिफेरी जो प्राइमरी है, बेसिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, मोस्टली वो रूरल एरियाज में होते हैं में। तो उसके बाद आ जाता है ये CHC, डिस्ट्रिक्ट, फिर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ जाते हैं, जो जिसमें मतलब और ज्यादा सेंटर स्पेशलिटी होती है, जैसे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। फिर फाइनली जो आते हैं हमारे जैसे मेडिकल कॉलेज जो होते हैं टुगेदर विद हॉस्पिटल्स, ये टेरिटरी सेंटर्स, वो सिटीज में आ जाते हैं। जी मैम। राइट राइट, वेरी गुड। सो रूरल्स हैं आपके, कम्युनिटी हॉस्पिटल्स हैं, मेट्रोपॉलिटन्स हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर भी जो मॉडर्न एरिया में रहेंगे, तो वो आपके लार्जर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में आ जाएंगे। तो इस तरह के लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन वाइज ऑल्सो आपकी कैटेगराइजेशन हो जाती है हॉस्पिटल्स की। नेक्स्ट इज ओनरशिप। नैन्सी। Yes, ma'am. Ma'am, like in some hospitals, there are many bosses, and in some hospitals there is a single boss, like the CMD. There are partners in the hospital, so they have different decisions about everything. If discuss something, and there are some hospitals in which single ownership is there, single CMD is there. सो दैट मीन्स प्राइवेट है, पब्लिक है, नेटवर्क हॉस्पिटल है, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है ना। ओनरशिप पे भी डिपेंड करता है कि हाउ मेनी ओनर्स आर देयर, हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर देयर, हाउ मेनी इन्वेस्टर्स आर देयर, राइट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, Specialized. तनवीर। Yes, ma'am. There are many specialized hospitals like for cardiac surgeries and for their eye special. Like there was Vision Eye Care, which only treated eye-related problems. Okay, and then you mentioned earlier cancer hospitals, Yeah, maternity Tata Cancer hospitals, Hospital. है ना। They are working specialization to to s- uh, to provide care to the cancer patients. Correct. So, on basis of the specialization, also we have the categorization of the hospitals. ओके, अभी ये थोड़ा सा ये जैसे ये आपका एक्यूट हॉस्पिटल, एम्बुलेटरी सर्जरी सेंटर्स, ये सब तो पता होगा। चिल्ड्रन हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, कम्युनिटी हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, प्रॉफिट हॉस्पिटल्स, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। Yes, ma'am. ये इजी है ना, ये कर लेंगे ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। स्टेट हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी, टीचिंग, ट्रॉमा सेंटर्स। ओके, एक बार ना just take 10 minutes, go through the list of various departments in the hospital.
And if you're not clear with any point here, then we can explain. Okay. Just go through the list. Take 10 minutes, go through the list. इसमें ना कई बार क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट नोट्स वगैरह. इसको
Guys, done? Yes, ma'am. Everyone? Nancy, Dr. Singh, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? Yes, अच्छा, ma'am. गुड, वेरी गुड. सो कभी कभी क्या ना, किसी किसी उस पे भी शॉर्ट नोट भी आ जाता है, ठीक है? तो जब आप स्टडी करोगे इसको, तो एक एक दो दो लाइन का वो भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? अच्छा, एनी आइडिया दिस टाइम लाइक यू हैव एमसीक्यूज और यू गोना हैव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस? No, Ma'am, ma'am, no no idea. idea till now. हैव यू डिस्कस्ड? अच्छा, लास्ट टाइम कैसा हुआ है, कुछ पता किया? मैम सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हुए थे, बट अच्छा, फर्स्ट ईयर वालों के ऑब्जेक्टिव हुए थे. ओके. वो भी सिर्फ इंटरनली हुआ था, उसके बेसिस में ही मार्क्स में थे। अच्छा, उसके वजह से. अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया. तो बढ़िया हो गया फिर. चलो, cool. Okay. Uh, then we have, okay, then we have one topic. उस पे भी एक आपका क्वेश्चन काफी आता है, which is known as multi-speciality hospital. Okay, guys, give me a moment. Okay, give me a moment. I'll be back. Give me 2 minutes, huh? Okay, ma'am. Okay. Sorry, guys. So next topic that we're going to study is what is multi-speciality hospital. So what is your view on that, guys? क्या होता है multi-speciality hospital? Ma'am, where there are very different facilities of all departments in single hospital. Very good. Okay, so you have all like quite a many solutions to a lot of ailments and diseases with a expert team of doctors and specialists. So here you say that the patients are immensely taken care of with air conditioned rooms, canteens, personalized care, counseling, additional services, right? Correct? Yes, ma'am. Yes. Okay, so now what are the advantages of multi-speciality hospital? So numerous medical specialties under one roof, which includes but not limited to the following like general medicine, ENT, dermatology. So मतलब जितने भी departments आप उसमें अभी आपने पढ़े हैं, most of the departments are incorporated in this particular type of hospital. ठीक है? Then it offers high-end diagnostics, which include both general pathology such as blood profiling screening, X-ray scanning, USG, critical diagnosis. So ये सारी जितने भी आपके lab services हैं या dialysis services है या diagnosis services हैं, ये सारी आपको एक common roof में मिल जाती हैं. ठीक है?
Then also it is like 24/7 open, right? So you have a 24/7 का support system in the multi-speciality hospital, जिसमें आपको ambulance services भी मिलेगी, pharmacy भी मिलेगी, blood bank भी मिलेगा, then आपके critical units भी रहेंगे, ये सारी चीजें आपको multi-speciality में मिल जाती हैं। अच्छा, अब कह रहे हैं कि हमको क्यों मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है चूज करना चाहिए, ठीक है? ऐसा क्या, वाई डू वी, आई मीन ये सारी फैसिलिटीज हैं हमारे पास। दूसरी बात, हम इसके अंदर जो एक एडिशनल बेनिफिट्स की जहां तक बात करते हैं, जैसे रिलायबल विद सिक्योर डेट, रीजनेबल प्राइसेस होते हैं, कन्वीनियंट और क्लीन साइट सिस्टम होती है, डिजिटल मार्केटिंग, ये बेसिकली ये आपके एडिशनल कस्टमाइजेशन ऑफर्स हैं अपार्ट फ्रॉम योर दी बेसिक क्योरिंग फैसिलिटीज, ठीक है? जैसे हमारा टाइम बचेगा, ब्रांडिंग है उसकी, आप कई बार साइट से इंफॉर्मेशन ले लेते हो, फोन पे इंफॉर्मेशन ले लेते हो, 24/7 का सपोर्ट है, ये सारी चीजें होने की वजह से हमारा मल्टी स्पेशलिटी इज अ बेटर ऑप्शन। अब कह रहे हैं कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इंडिया में क्या अभी सिनेरियो है, like what is the status in Indian system about the multi-speciality hospital. So guys, just go through this for 5-7 minutes. This will give you the insight and then we'll discuss. Okay, spend 10 minutes here also. क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम में अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो इंडियन सिस्टम से रिलेटेड ये लोग काफी कुछ पूछते हैं, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर एंड द इम्पोर्टेंट एरिया फॉर understanding the multi-speciality hospital, and from exam point of view also this is an important area, ठीक है? So spend 5-7 minutes, just read it out and then we'll discuss. Okay, take 10 minutes, I think बड़ा है तो 10 मिनट लगेंगे इसको पढ़ने में। Okay, Okay, Dr. ma'am. Singh, guys, Nancy, Yes, ma'am. is it okay? जी मैम। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, पढ़ो एक बार।
Done? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Easy? Yes, ma'am. Excellent. Yes, ma'am. चलो फटाफट से एक समरी बता दो, छोटी सी, कोई भी बता दो। तनवीर? Yes, ma'am. Ma'am, it is basically about how medical transactions are recorded in a Hmm. hospital, Hmm. and hospitals. Every hospital use HMS, Hospital Information System, to Hmm. record their medical transactions, like patients' medical requirements, Hmm. uh, their treatment record, Hmm. like the quantities of the supplies Hmm. the hospital has purchased, Right. everything related to the patient, and also the uh, also the hospital, like how Correct. much yeah, how much they have spent, what is their revenue, all these are recorded in HIS. Right. So nowadays, multi-speciality hospital management system are also applied. Like, I mean, as he said, HMS. So wherein, we have the electronic recorded system, and then a lot of, different departments are also categorized and, incorporated in multi-speciality hospital system, right? Then we have important servers and then a firewall system, security systems also in the hospital management system. So nowadays, like this hospital management system itself has become a solution for managing the different challenges, different department, different categories, different records in the hospital. ठीक है, लिख लेंगे ना इसके ऊपर, मतलब it's not difficult, right? No, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then these are basic services under hospital management: emergency room services, short-term hospitalization, X-ray, blood services, prescription, mental health, nutritional counseling, family support services. All these are the services for the under the hospital system nowadays. Uh, okay, then बेड्स में भी मतलब अभी कैटेगरीज हो गई है, सिंपल बेड में जाना है, स्पेशल बेड में जाना है, कार्डिक बेड्स हैं, ब्लैंकेट बेड्स हैं, है ना, ये अब हो गए हैं ना, पहले नहीं होते थे। Yes, करेक्ट? ma'am. Single, twin sharing. हाँ हाँ, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है विच इज इम्पोर्टेंट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो नर्सिंग के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? सो एक तो आपका रजिस्टर्ड नर्स होता है। अच्छा, रजिस्टर्ड नर्स आपका यूएस में ही होता है या इंडिया में भी रजिस्टर्ड नर्स यूज करते हैं, आरएन? हम इंडिया में भी होता है, इंडिया जीएनएम में भी होता है। रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है। और ये जो एनपी है, नर्स प्रैक्टिशनर, ये कैटेगरी नहीं है हमारे यहाँ, है ना? नो हमारे यहाँ मैम। पे एएनएम, जीएनएम और वो है बीएससी, BSc. करेक्ट? बीएससी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको हटा देती हूँ। बट ये फिर भी आप लोग पढ़ लेना इसको, वैसे तो अदरवाइज तो वैसे मैम इम्पोर्टेंट है। मिडवाइफ भी है वैसे, मिड सर्टिफाइड नर्स मिडवाइफ। हाँ हाँ, करेक्ट। सो ये ना छोटे छोटे मतलब उसके वो दिए हुए हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन करना, पेशेंट को मॉनिटर करना, देन कोलैबोरेट करना टीम्स के साथ पेशेंट केयर में, देन सपोर्ट सर्विसेज देना, ऑप्टिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स को यूज करवाना, ऑपरेटिंग मेडिकल, देन पेशेंट्स को यूज एजुकेट करना हाउ दे कैन मैनेज द इलनेस, राइट, ट्रेनिंग, देन इन्वेंटरी मेंटेन करना, ऑल दीज टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर देयर इन द नर्सिंग सिस्टम। ये सब तो बेसिक है, सबको पता ही है, राइट? अच्छा, एक छोटा सा और है विच इज आपका ये मैं आपको दे देती हूँ। एक आपका है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो आई थिंक मैंने डाली है इसमें, नहीं, लेट मी चेक। हाँ, ये क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर आपका, एग्जाम में भी आता है इसका, कि जो आपके नर्सिंग है, नर्सिस को सुपरिटेंडेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं या क्या क्या उसकी ड्यूटीज रहती हैं। सो फर्स्ट इम्पोर्टेंट इज जनरल सुपरविजन, राइट? Yes. ठीक है। यस मैम।
देन आपके डिपार्टमेंट में क्लेanलीनेस रहे, एनवायरनमेंट में क्लेanलीनेस रहे, वो भी उसकी ड्यूटी है. मैम टेकिंग राउंड्स ऑफ Rounds different also, departments. correct. Then receiving reports from night staff regarding the nursing care, analyzing Yes, the services, handovers for handovers, supervise करना. roster banana, right? और उसके बाद Yes ma'am, planning. overtime verify करना. करेक्ट. देन गुड मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स रहेंगे वो सब डिफाइन करना, राइट. देन एक्टिंग एज अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑल्सो फॉर द यूनिट एंड डील विद प्रॉब्लम्स इफ एनी, स्पेशली विद द स्टाफ जो है आपका, कोई स्टाफ एंड पेशेंट केयर में कोई इश्यूज आते हैं. देन नर्सिस को इन्फॉर्म रखना अगर कोई नई प्रॉब्लम आ जाती है. एजुकेटिंग नर्सिस ऑल्सो, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, उनके बाद वार्ड टीचिंग प्रोग्राम्स, क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स को अरेंज करना. मतलब जो स्टूडेंट्स के अपने एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, उनके साथ उनके एक सेशंस करवाना, Training काउंसलिंग session. ट्रेनिंग सेशन करवाना, राइट. देन आपका राउंड्स वगैरह लगाना, वो हमने बात कर ली है. रिपोर्ट्स, फीडबैक्स, ये सारी चीजें आपका आपके सुपरिटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, ठीक है गाइस. यस मैम. ये वाला टॉपिक ना पढ़ लेना अच्छे से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ना ये जो टॉपिक है टेक्निक्स वाला, इसको देखते हैं. शायद हमारा एक सेशन आप लोग, अच्छा ये जो बैचलर्स वाले बच्चे हो तुम लोग, तुम्हारे पास हॉस्पिटल ऑपरेशंस है ना? Yes ma'am. हाँ, यस तो मैम. शायद उसी एक 1 आवर का सेशन तुम लोग के साथ होगा अलग से, विच विल नॉट बी विद मास्टर्स. सो विल डिस्कस दिस इन दैट सेशन. ठीक है, ये वाला थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा. ओके. ओके मैम. So rest all we have completed. I believe you'll be able to give a good paper from the topics that we have covered so far. Any question, any doubt, Dr. Singh? जी मैम. मैं एक थोड़ा पूछना, ये जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है तो हाँ. या है ना, इनकी भी क्वालिफिकेशन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, मतलब मैंने जैसे एमएचए वगैरह, MSc. एमएससी ना, एमएससी किस फील्ड में होते हैं इनमें? Nursing. हेल्थ में, नर्सिंग. अच्छा, ओके ओके, ठीक है. मिल गई इंफॉर्मेशन डॉक्टर सिंह? जी मैम, जी Sorry मैम. ma'am. नहीं नहीं, गुड. आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी नैन्सी. बच्चे प्रोएक्टिव रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है ना. मैम कई नर्सेज भी यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में, उन्होंने भी एमएचए किया हुआ ना, तो वो भी, हाँ, तो वो भी राउंड जब करते हैं तो वो साथ में वो भी कहते हैं हमने भी किया है, तो अच्छा मुझे लगा और भी है ना, तो बाकी भी सीनियर डॉक्टर सीनियर ने भी की होगी. एक्चुअली दोनों ही होते हैं, एमएचए करके भी हो सकते हैं और वो एमएससी भी. उनकी अपनी वो होती है विल कि वो करना चाहते हैं आगे या नहीं करना चाहते. स्टडीज तो चलती ही रहती है. जी मैम. ठीक है. एनी अदर डाउट? मैं ये वाली फाइल अभी शेयर कर देती हूँ सीमा के साथ, एंड सीमा विल फर्दर शेयर इट विद यू गाइस. ठीक है, ओके मैम. चेंजेस सेव कर लो, सेव करके. ठीक है. And in case you people face any issue, just let me know. Okay. श्योर मैम. Chalo. All right then. Thank you.